नमस्ते सभी को स्वागत किया है मेरे दूसरे से और बात करेंगे आज आप लोगों के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा Q3 रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया कंपनी ने और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो Q3 का रिजल्ट अभी निकल के आया है और आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और नेट प्रॉफिट रेज 4.5% टू रेज 5,055 करोड़। Q3 result around 156 companies are announcing their result for the December quarter of the ongoing financial year 2026 today. Some of the notable names among the include Aadhar, Housing Finance, Ajanta, Pharma, Ambuja, Cement, Bajaj, Auto Bank of Baroda, Blue Dart Express, Bridge Enterprise, Cholamandalam Investment and the Financial Company, Industry, Exide Industry, Glenmark, Pharmaceuticals, Godfrey, Phillips India, Jindal Steel, Kajaria, Keramist, KEC International, Dear Lab, Medplus Health Service, Meesho National Aluminium Company, Nestle India, NTPC Power Grid Corporation of India, Relaxo Footwears, Reliance Power, Steel Authority of India, Scoda Tubes, Tata Investment Corporation, Triveni Engineering Industrial and Welspun Corp. Bank of Baroda Q3 result live net profit raised 4.5% to raise 5,055 crore and Bank of Baroda reported a standalone net profit of raise 5,054.63 crore for Q3 financial year 26, marking a 4.5% YoY raised from the raised 4,837.34 crore. Or net profit reported in Q3 financial year 25, the bank's gross NPA ratio and reduced to 2.0%. और अभी आप लोगों से डिस्कस करेंगे जिंदाल स्टील Q3 रिजल्ट के बारे में। और नेट प्रॉफिट फॉल्स 42% टू 672 करोड़। और जिंदाल स्टील रिपोर्टेड ए स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट ऑफ 672.53 crore for Q3 financial year 26 and marking a 42% YoY fall from the rest 1,162.77 crore net profit हो रहा है। और reported in Q3 financial year 2025 that includes an exceptional cost of rest 52.80 crore to account of the impact of the new labor code which took effect last year. The firm revenue from operation meanwhile rose 19% YoY to 13,559.05 crore. और NTPC Q3 रिजल्ट लाइव अपडेट्स आप लोगों ने देखा जो प्रॉफिट रेस